Hello students. Hello. So let us begin, students. We'll start. So we're discussing uh, the probable questions that can be asked for this INICET. Welcome all of you to this lecture of anatomy. Okay, we'll now start with this MCQs. Have a look at this MCQ. Identify the mark structure. Identify the mark structure. So students, what do you say? What do you think is this? Now, what structure is this? This one. This is the midbrain, correct? What is this? Pons. And this is the medulla. Medulla. So midbrain, pons and medulla. What is this in the medulla? This is what we call as the pyramids. Pyramids. Next to the pyramids, what is this structure? Olives. So pyramids, next to the pyramids is the olives, and next to the olives is the inferior cerebellar peduncle. Inferior cerebellar peduncle. Right? Now this inferior cerebellar peduncle connects the connects the medulla to the cerebellum. Medulla to the cerebellum. What is this? This is the middle cerebellar peduncle. Middle cerebellar peduncle. Fine, that's fine. Now, what is this? What is this nerve? So, what is this junction known as, बच्चों? ये junction क्या है? ये है pontomedullary junction. बराबर? ये junction का नाम क्या है? Pontomedullary junction. And ये junction पे तीन nerves attached होते हैं. There are three nerves which are attached to this junction: the sixth, the seventh, and the eighth nerve. तीन nerves होते हैं. सबसे medial कौन सा nerve है? सबसे medial is the sixth, फिर होता है सेवेंथ, एंड सबसे लैटरल होता है एथ नर्व. सेवेंथ एंड एथ नर्व सीक्वेंस में होते हैं. तो सबसे मीडियल सिक्स्थ, फिर होता है सेवेंथ, एंड फिर होता है एथ. तो द मोटर नर्व इज द मोस्ट मीडियल एंड द सेंसरी नर्व इज द मोस्ट लैटरल. सेंसरी नर्व सबसे लैटरल होता है. एंड जो फेशियल नर्व है, सेवेंथ नर्व कौन है? फेशियल नर्व. अब फेशियल नर्व के दो रूट्स हैं, मोटर रूट एंड सेंसरी. मोटर एंड सेंसरी रूट. द सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व को क्या बोलते हो? What is the sensory root of facial nerve known as? Nervus intermedius. Nervus intermedius or the nerve of Risberg. Nerve of Risberg. ठीक है बच्चों? So what is this structure? What is this marked structure? This is the sixth nerve, है ना? ये क्या nerve होगा? ये होगा sixth nerve. Sixth nerve. अब all the nerves, जितने भी cranial nerves हैं, वो कहाँ से emerge होते हैं? They emerge from the ventral aspect. जितने भी cranial nerves हैं, ये कहाँ से emerge होंगे? Ventral aspect of the brainstem, except एक नर्व है जो डॉर्सल एस्पेक्ट से आता है. डॉर्सल एस्पेक्ट वो कौन है? फोर्थ नर्व. तो जितने भी क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ से आते हैं? वेंट्रल एस्पेक्ट से आते हैं. एक नर्व है जो डॉर्सल एस्पेक्ट से आते हैं, एंड दैट इज द ट्रॉक्लियर नर्व. ठीक है? तो विच इज दिस नर्व? थर्ड. एंड विच इज दिस नर्व? फोर्थ. सो थर्ड एंड फोर्थ नर्व्स आर अटैच्ड टू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन. एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है. द नर्व अटैच्ड एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स विद द मिडिल सेरेबेलर पेडंकल. तो पॉन्स एंड मिडिल सेरेबेलर पेडंकल के जंक्शन पे एक नर्व होती है. व्हाट इज दिस नर्व? द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, दैट्स द फिफ्थ नर्व. फिफ्थ नर्व. पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन पे कितने नर्व्स हैं? तीन नर्व्स होते हैं, सिक्स्थ, सेवन एंड एट. सिक्स, सेवन, एट. ओके. बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ऑलिव्स तीन नर्व्स होते हैं. पिरामिड्स एंड ऑलिव्स के बीच में 9, 10 एंड 11. एंड बिटवीन द between the olives, I'm so sorry, between the olives and the inferior cerebellar peduncle तीन नर्व्स होते हैं. olives and the inferior cerebellar peduncle के बीच में तीन नर्व्स होते हैं, 9, 10 and the cranial axis. Cranial axis. And between the pyramids and the olives, that's a 12th nerve. ठीक है? pyramids and olives के बीच में क्या होती है? 12th nerve. Clear to all of you? So
Answer for this is abducens nerve. Abducens nerve. So where is the nucleus of abducens nerve located? बच्चों ये जो न्यूक्लियस है abducens nerve का वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? pons में. pons. lower half of the pons. lower half of the pons and ये nucleus of abducens nerve को एक नर्व होती है जो वाइंड करती है. एक नर्व होती है जो वाइंड करती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ abducens nerve. ये कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व. द फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व ये क्या करते हैं? ये abducens न्यूक्लियस को वाइंड करते हैं एंड बाहर आते हैं. ठीक है. सो दैट्स द फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व. Clear to all of you? Oculomotor nerve कहाँ पे अटैच्ड है? I mean, where is the oculomotor nerve का न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होता है? It's in the midbrain at the level of superior follicular. तो oculomotor nerve का न्यूक्लियस होता है midbrain में at the level of superior follicular. Fine. Facial nerve. Facial nerve के दो रूट्स हैं. एक होता है motor root, दूसरा होता है sensory root. Sensory root of facial nerve को क्या बोलोगे? Nervous intermedius. Nervous intermedius या फिर उसका दूसरा नाम है nerve of Frisberg. ठीक है बच्चों. एंड ये मोटर रूट ऑफ फेशियल नर्व क्या सप्लाई करेगा? द मोटर रूट ऑफ फेशियल नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल. जो मोटर रूट ऑफ फेशियल नर्व है वो क्या सप्लाई करता है? मसल्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करेगा. फाइन, परफेक्ट. दिस क्लियर? ओके. व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये देखिए, ये कौन है? ये दैट्स अ पीनियल ग्लैंड. दैट्स अ पीनियल ग्लैंड. ये कौन है? These are the mammillary bodies, pineal gland and mammillary body. Fine, clear to all of you? So एक MCQ clear है. Now we go to the other MCQ. Have a look at this MCQ. So a 38 years old woman, gravida 2, para 1, at 24 weeks of gestation comes to the physician for prenatal evaluation. She has no history of major medical illness and takes no medication. Fetal USG shows a cardiac defect resulting from abnormal development of endocardial cushions. This defect is most likely to result in which of the following? Which of the following? मतलब abnormal development of endocardial cushion. ये endocardial cushions क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं AV cushions. AV cushion. Right? Like ये atrium है and ये जो ventricles है, ये जो पहले बनता है दैट्स AV cushion. पहले क्या बनता है? यहाँ पे AV cushion. अब ये AV cushion बनने के बाद ये एट्रिया से एक वॉल ग्रो होता है. एक वॉल ग्रो होता है फ्रॉम द एट्रिया. व्हाट इज द सेप्टम? ये सेप्टम का नाम क्या होगा? सेप्टम प्राइमम. सेप्टम प्राइमम. अब ये सेप्टम प्राइमम इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द AV cushion. ये AV cushion की तरफ ग्रो हो रहा है. व्हाट इज दिस ओपनिंग नोन एज? ये ओपनिंग का नाम क्या है? ऑस्टियम प्राइमम. ऑस्टियम प्राइमम. ओके. अब ये जो सेप्टम प्राइमम है, दिस सेप्टम प्राइमम कम्स एंड फ्यूजेस विद द AV cushion. ये AV cushion के साथ फ्यूज होता है और ये ब्रेक हो जाता है. AV cushion के साथ फ्यूज होके ये ब्रेक होता है. अब ये ओपनिंग को क्या बोलोगे आप? अब ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑस्टियम सेकेंडम और फोरामेन सेकेंडम. फोरामेन सेकेंडम. फाइनली एक दूसरा सेप्टम बनता है. यहाँ पे एक दूसरा सेप्टम बनता है एंड इसका नाम है सेप्टम सेकेंडम. सेप्टम सेकेंडम. एंड ये ओपनिंग क्या होगा? फोरामेन ओवी. ये ओपनिंग होगा फोरामेन ओवी. ठीक है. तो बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये जो सेप्टम प्राइमम है ना, देखो ये सेप्टम प्राइमम आके फ्यूज हो जाता है AV cushion के साथ. अगर ये AV cushion ही नहीं होगा, अगर ये AV cushion नहीं होगा तो इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स बनेंगे. सेप्टल प्राइमम्स, द सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट्स बनेंगे व्हेन अगर AV cushion नहीं होगा. बिकॉज क्या होता है? ये जो सेप्टम प्राइमम है ये आके किसे फ्यूज होगा? ये आके फ्यूज होगा AV cushion को. तो इफ दिस AV cushion इज नॉट देयर, अगर AV cushion ही नहीं होगा तो दिस सेप्टम प्राइमम फ्यूज नहीं हो सकता किसी के साथ. राइट. सो देयर विल बी अ इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. क्या बनेगा? इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है. अब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अगर आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम देखोगे, देखो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये कौन है? AV cushion. ये AV cushion. ठीक है. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कोई बोल सकता है इज ऑफ टू पार्ट्स. एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट एंड दूसरा होता है मस्कुलर पार्ट. तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है मस्कुलर पार्ट, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट. अब जो मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट वो कहाँ ग्रो होता है? ग्रोज इन द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकुलर कैविटी.
ये वेंट्रिकुलर कैविटी के फ्लोर में ग्रो होता है। ये क्या होता है? मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट्स अ मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट दो सोर्सेस से डिराइव होता है। एक एक यहाँ पे ना, ये एक बल्बार रिज बनती है, बल्बार रिज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बल्बार सेप्टम। ये बल्बार सेप्टम कहाँ पे बनता है? कोनस के अंदर। तो एक बल्बार रिज आगे से ग्रो होगा, एक से ग्रो होगा, यूज होंगे टू फॉर्म द बल्बार सेप्टम। तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दो पार्ट से बनता है। एक होता है बल्बार सेप्टम एंड दूसरा होता है प्रोलिफरेशन ऑफ द कुशन, प्रोलिफरेशन ऑफ एवी कुशन। तब अगर ये एवी कुशन नहीं होगा, इफ दिस एवी कुशन इज नॉट देयर, फिर क्या होगा? देयर बी अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब अगर दैट मीन्स अगर एवी क्वेश्चन नहीं बना, सपोज इफ एवी क्वेश्चन का एबनॉर्मलिटी हो गया, वो बना ही नहीं, तो फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स भी होंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी होंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज द एट्रियल सेप्टम, जो सेप्टम प्राइमम होता है, वो सेप्टम प्राइमम आपका एवी क्वेश्चन के साथ। अगर एवी क्वेश्चन ही नहीं होगा, सो देन एवी क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो देन देयर बी अ सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट। एंड अगर ये एवी क्वेश्चन नहीं होगा, सो देयर विल बी अ डिफेक्टिव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द आंसर वुड बी एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। आंसर होगा एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलिट क्या होता है? फॉलिट टेट्रोलॉजी कब होता है? व्हेन यू नो द फर्स्ट चेंबर, जो हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं, प्रिमिटिव चेंबर, प्रिमिटिव हार्ट है ना, इसके चार चेंबर्स होते हैं। What is the first chamber? The first chamber is known as truncus arteriosus. Truncus arteriosus. दूसरा कौन है? दूसरा है bulbus cordis. दूसरा है bulbus cordis. सॉरी, एक है truncus arteriosus, दूसरा है ventricles, ventricles, तीसरा है atria, and ये है sinus, sinus venosus. Right? So the first chamber is truncus arteriosus. उसके बाद है ventricles, उसके बाद है atria. The last chamber is sinus venosus. तो ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, इसमें एक सेप्टम बनता है। ये सेप्टम का नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइरल सेप्टम। स्पाइरल सेप्टम। तो ये स्पाइरल सेप्टम बनता कहाँ पे है? ट्रंकस आर्टीरियोसिस के अंदर। ठीक है? सो स्पाइरल सेप्टम इज फॉर्म्ड विद इन द ट्रंकस आर्टीरियोसिस, एंड ये जो स्पाइरल सेप्टम है, वो ट्रंकस आर्टीरियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है एसेंडिंग एओर्टा एंड दूसरा है पल्मोनरी ट्रंक। ascending aorta and pulmonary trunk। ठीक है? अब ये जो स्पाइरल सेप्टम है, ये स्पाइरल सेप्टम सेंटर में बनता है, सेंटर में। तो ascending aorta and pulmonary trunk सेम साइज के होते हैं, ये दोनों सेम साइज के होते हैं। ascending aorta and pulmonary trunk are सेम साइज। अगर ये सेप्टम बीच नहीं बना, if this septum is not formed midline, if this septum goes to one side, अगर ये सेप्टम एक साइड पे जाएगा, तो one vessel is small and one vessel is large। तो ये छोटा कौन बनता है? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। एंड इसे आप क्या बोलोगे? पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, तो राइट वेंट्रिकल है, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उससे क्या बनेगा? द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बिकॉज ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड द प्रेशर, जो प्रेशर बनेगा, इससे क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट्स बने, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड which part of the septum is defective? membranous part, membranous defects बनते हैं। एंड जब membranous defect बनते हैं, तब क्या होगा? overriding of aorta, there occurs overriding of aorta, and this is Fallot's tetralogy, Fallot's tetralogy। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? So what is the main cause of Fallot's tetralogy? ये जो सेप्टम है ना, स्पाइरल सेप्टम, ये एक साइड पे शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग, आई मीन इट्स द शिफ्टिंग ऑफ द स्पाइरल सेप्टम टू द राइट साइड। ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इट्स ऑफ स्मॉल साइज, ये बना पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, तो व्हाट हैपेंस इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, व्हाट हैपेंस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स बनते हैं। एंड जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बनेगा, तब क्या होगा? ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एंड इसे हम बोलेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट।
समझ में आया? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स ये कब होता है? पर ये जो स्पाइरल सेप्टम है ना, ये जो सेप्टम है, स्पाइरल सेप्टम जिसका नाम है, दिस सेप्टम हैज टू स्पाइरल इन सच अ वे, स्पाइरल्स इन सच अ वे दैट एओर्टा ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा एंड पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। नॉर्मली ये स्पाइरल सेप्टम है वो इस तरह से स्पाइरल होगा, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा एंड पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। अगर ये स्पाइरलिंग ठीक से नहीं हुआ, अगर ये स्पाइरलिंग ठीक से नहीं हुआ, एओर्टा ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट। एंड इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रांसपोजिशन। The transposition of great vessels occurs due to improper spiraling of the septum, improper spiraling of the septum। ठीक है बच्चों? एंड पेटेंट फोरामेन ओवल मैंने अभी बोला आपको, ठीक है? The answer for this is atrioventricular septal defects। I hope clear हो है? I hope this is clear to all of you. Yes? Okay, we go to the next. Now, which of the following lobes of the lung is affected when there's aspiration in supine position? Aspiration in supine position. एस्पिरेशन अभी है ना, अपन क्या डिस्कस करते हैं ना, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स अपन डिस्कस करते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। देखिए ये अपना राइट लंग है, ये राइट लंग है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई राइट लंग के, ये लेफ्ट लंग है, इसका एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे कार्डियक नॉच बन गया, ये टंग लाइक प्रोसेस लिंगुला, ये है लिंग। ओके, अब ये क्या फीचर होगा? ऑब्लिक, ये है ऑब्लिक फीचर एंड ये क्या फीचर होगा? हॉरिजॉन्टल फीचर। ये है ऑब्लिक फीचर, ये है हॉरिजॉन्टल फीचर। तो ये क्या लोब होगा? अपर लोब, ये है मिडिल लोब, ये है लोअर लोब। अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। ये ऑब्लिक फीचर है, ये है अपर लोब, ये है लोअर लोब, अपर लोब एंड लोअर लोब। ये है अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। तो राइट लंग के 3 लोब्स हैं, 2 फीचर्स है। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं, 1 फीचर है। 2 लोब्स, 1 फीचर। What are the bronchopulmonary segments? Bronchopulmonary segments of the right lung upper lobe, right lung upper lobe क्या होंगे? Apical, anterior, posterior। Bronchopulmonary segments of the right lung upper lobe, ये है apical, anterior, posterior। For the middle lobe, for the middle lobe bronchopulmonary segments क्या होंगे? Medial and lateral, medial and lateral। And for the lower lobe bronchopulmonary segments क्या होंगे? अपाइकल, अपाइकल का दूसरा नाम है सुपीरियर सेगमेंट, सुपीरियर सेगमेंट। यह है एंटीरियर बेसल, यह है लैटरल बेसल, यह है पोस्टीरियर बेसल एंड एक अंदर होता है मीडियल बेसल, मीडियल साइड पे होता है ये मीडियल बेसल। ओके, तो कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हो गए? कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हो गए? 10, 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन द राइट लंग। ठीक है, which are the bronchopulmonary segments of the upper lobe? Apical, anterior, posterior, apical, anterior, posterior। For the middle lobe, medial and lateral। For the lower lobe 5 bronchopulmonary segments हैं, apical, anterior basal, lateral basal, medial basal। So total of 10 bronchopulmonary segments होते हैं राइट लंग। लेफ्ट लंग के bronchopulmonary segments देखिए, लेफ्ट लंग के bronchopulmonary segments होते हैं कुछ ऐसे, apical, anterior, posterior, apical, anterior, posterior। एमसीक्यू है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ द लिंगुलर लोब, ये लोब का दूसरा नाम है लिंगुलर लोब। सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ द लिंगुलर लोब आर, दिस इज सुपीरियर लिंगुलर एंड होगा इंफीरियर लिंगुलर। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ द लिंगुलर लोब क्या होंगे? सुपीरियर एंड इंफीरियर लिंगुलर। फॉर द लोअर लोब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स वुड बी अपाइकल, सेम है ये, अपाइकल, एंटीरियर बेसल, बेसल, पोस्टीरियर बेसल। एंड ये जो मीडियल बेसल होता है ना, ये एब्सेंट होता है, मीडियल बेसल सेगमेंट एब्सेंट लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हो गए? 9। एंड राइट लंग में कितने हो गए? ठीक है। नाउ यू टेल मी, जब अपन व्हेन वी लाई सुपाइन, अपन जब सुपाइन लाई करते हैं, व्हेन वी लाई ऑन द बेड सुपाइन, सबसे लोवेस्ट पार्ट ऑफ लंग कौन सा होता है? विच इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लंग इन सुपाइन पोजिशन? दैट्स द अपाइकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, अपाइकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। ठीक है ना? अपाइकल सेगमेंट को दूसरा नाम क्या है? सुपीरियर सेगमेंट। तो अपाइकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब जो है, इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग इन सुपाइन पोजिशन। मतलब जैसे एब्डोमिनल कैविटी, अगर अपन सुपाइन लाई करते, वी लाई सुपाइन, सो विच इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी?
The most dependent part of the peritoneal cavity is hepatorenal pouch of Morrison in supine position. In supine position is hepatorenal pouch of Morrison, right? वैसे ही, which is the most lowest part of the lung in supine position, that is the apical segment of lower lobe. Apical segment of lower lobe. So when there's an aspiration, a small child is feeding, feeding हो रहा है उसका बेटा, छोटा बच्चे का, the child vomits, वो vomit करता है, aspirate करता है, vomiters, aspirate. So what is the child develop? Aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia. The aspiration pneumonia कौन से लोब में कॉमन है? It's the apical segment of the lower lobe. Apical segment of the lower lobe का दूसरा नाम क्या है? Superior segment. So right superior lobe. Apical segment of the lower lobe. It is also known as the right superior segment. Right superior segment. ठीक है? Clear to all of you? Okay, proceed करते हैं अब आगे. Right. Arrange the lung hilar structures from anterior to posterior. तो बच्चों हाइलम ऑफ द लंग है, हाइलम जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स निकलते हैं जाते हैं. So what are the structures in the hilum of the lung? So just understand one thing. Hilum of the lung कैसे याद रखोगे इसको? It is vein, artery, bronchus. Anterior to posterior, ये है vein, artery, bronchus. Vein, artery, bronchus. ये अपना राइट लंग है. सपोज ये अपना राइट लंग है एंड ये अपना लेफ्ट लंग. राइट लंग, लेफ्ट लंग. आप पीछे से देख रहे हो, आप पीछे से देख रहे हो. So how are the bronchopulmonary segments from anterior to posterior? How is the arrangement of structures in the hilum of the lung? Vein, artery, bronchus. आगे से पीछे आप आ रहे हो, vein, एंड ऊपर से नीचे कैसे? सुपीरियर टू इंफीरियर इट इज आर्टरी ब्रोंकस वेन. सुपीरियर टू इंफीरियर क्या होगा? आर्टरी ब्रोंकस वेन. यहाँ पे भी आर्टरी ब्रोंकस वेन, आर्टरी ब्रोंकस वेन. एंड राइट लोब में एक और ब्रोंकस होता है, एक और ब्रोंकस होता है राइट लंग में. सो इट इज ब्रोंकस आर्टरी ब्रोंकस वेन, ब्रोंकस आर्टरी ब्रोंकस वेन. एंड एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या है? वेन आर्टरी ब्रोंकस, वेन आर्टरी. So let me just write it down. Anterior to posterior. Anterior to posterior, the vein, artery, bronchus. Right? Anterior to posterior क्या होता है? Vein, artery, bronchus. Common है दोनों lungs के लिए, same है. And superior to inferior. Superior to inferior, left, right. Superior to inferior, left and right. It is artery, bronchus, vein. Artery, bronchus, vein. एंड यहाँ पे ब्रोंकस, आर्टरी, ब्रोंकस, ब्रोंकस, आर्टरी, ब्रोंकस. ठीक है? सो राइट लंग, लेफ्ट लंग, दिस इज हाउ यू रिमेंबर. बस ये याद रखना है आपको. एंटीरियर टू पोस्टीरियर इट इज वेन, आर्टरी, ब्रोंकस. सुपीरियर टू इंफीरियर इट इज आर्टरी, ब्रोंकस. राइट साइड पे और एक ब्रोंकस डाल दो. सो ब्रोंकस, 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 आर्टरी, ब्रोंकस. ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So how is the structure from anterior to posterior? Anterior to posterior. Yes, anterior to posterior कैसे होगा? It is vein. It is pulmonary vein, pulmonary vein, pulmonary artery, bronchus. So it is 3, 4, 1, 4, 1, and सबसे पीछे होता है bronchial artery. सबसे पीछे होता है bronchial artery. Answer is C. C follows. Answer is C. समझ में आ रहा है बच्चों? Are you able to follow this? The arrangement of structure is vein, artery, bronchus, and सबसे पीछे होता है bronchial artery. Bronchial artery. तो ये मैंने बहुत चीज दे दी आपको याद रखने के लिए. स्ट्रक्चर्स इन हाइलम एंड सुपीरियर टू इंफीरियर. ठीक है? Okay, the answer is C for this. Coming to the next MCQ, have a look. देखिए बच्चों, a child lacks thymus and inferior parathyroid gland. Thymus and inferior parathyroid gland.
defective development of which of the following structures is likely to cause? Child lacks thymus and inferior parathyroid gland. Thymus and inferior parathyroid. Defective development of which of the following structures is likely to cause? What do you say? क्या बोलते हो आप? तो बच्चों ये क्या है? ये ऐसे अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ ऐसे, and if I draw join this, ये मैंने क्या बनाया? कोई बोल सकता है? यस, ये मैंने क्या बनाया? तो ये कौन है बाहर से? दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म। ये अंदर से कौन है? एंडोडर्म, ये है एंडोडर्म। एंड ये बीच में क्या होगा? बीच में होगा मीसोडर्म। ये बीच में कौन है? मीसोडर्म। तो एक्टोडर्म बाहर है, एंडोडर्म अंदर से है, बीच, राइट। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो ये बना एक फेरेंशियल आर्च, सेकंड फेरेंशियल आर्च, थर्ड फेरेंशियल आर्च, फोर्थ एंड सिक्स फेरेंशियल आर्च। ये है फेरेंशियल आर्च। ओके, तो ये बाहर से कौन है? एक्टोडर्म। बाहर से एक्टोडर्म है तो इसे हम बोलेंगे एक्टोडर्मल क्लेफ्ट। एंड ये अंदर से क्या है? एंडोडर्म, तो इसे हम बोलेंगे एंडोडर्मल पाउच, एंडोडर्मल पाउच। So it is ectodermal clefts and endodermal pouches. Ectodermal cleft and endodermal pouches. ठीक है, तो बाहर से ectoderm, ectodermal cleft, अंदर से endodermal pouches. तो बच्चों, come on, let us understand this. What is the derivative of endodermal pouches? Anyone? Yes, कोई बोल सकता है? What is the first endodermal pouch form? First endodermal pouch. बोलिए बच्चों, first endodermal pouch से क्या बनता है? Yes, ये आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच। वन मोमेंट। ट्यूबोटिम्पैनिक क्रीसेस। एंड ये ट्यूबोटिम्पैनिक क्रीसेस से दो चीजें बनती है, एक है यूस्टेशियन ट्यूब एंड दूसरा है मिडिल ईयर कैविटी। ओके, तो फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच विल डिवाइड इनटू टू। फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच जो है वो दो में डिवाइड होता है, एक डॉर्सल पार्ट एंड एक वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये जो डॉर्सल पार्ट है ना, उससे बनता है ट्यूबोटिम्पैनिक दिस, ट्यूबोटिम्पैनिक क्रीसेस। ओके, सो द फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच के दो पार्ट्स होते हैं, डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल से बनता है ट्यूबोटिम्पैनिक क्रीसेस, एंड ये ट्यूबोटिम्पैनिक क्रीसेस से क्या बनेगा? द यूस्टेशियन ट्यूब एंड द मिडिल ईयर कैविटी। इससे बनेगा यूस्टेशियन ट्यूब एंड द मिडिल ईयर कैविटी।
Okay, I'm so sorry. Okay. Fine. Now am I audible? Now I should be audible. Sorry. So what I was telling you, femoral sheath के दो layers होते हैं, femoral sheath के दो walls होते हैं. एक होता है anterior wall. Okay, sorry for that. Okay, fine. अंशल, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा था, femoral sheath के दो walls होते हैं, एक होती है anterior wall, एक होता है posterior wall. So anterior wall is formed by fascia transversalis, है ना. anterior wall किससे बनता है? fascia transversalis से. posterior wall किससे बनता है? fascia iliaca से बनता है. अब femoral sheath के तीन कंपार्टमेंट्स होता है, एक है lateral, एक होता है intermediate, एक होता है medial कंपार्टमेंट. तो lateral कंपार्टमेंट में क्या होता है? femoral artery and the femoral nerve. जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है? femoral vein. एंड जो मीडियल कंपार्टमेंट है ये खाली होता है, इट्स एम्प्टी. इसे हम क्या बोलते हैं? femoral canal. हम बोलते हैं femoral canal, ये खाली होता है. द अपर पार्ट ऑफ femoral canal, ये जो अपर पार्ट है इसे बोलते हैं femoral ring. ओके, सो द अपर पार्ट ऑफ femoral canal को हम बोलेंगे femoral ring. क्लियर है? एंड ये femoral ring वाइडर किस में होता है? दिस femoral ring is wider in females. Why? Because pelvis females में वाइड होता है एंड ब्लड वेसल छोटे साइज के होते हैं. तो pelvis वाइड है, ब्लड वेसल्स छोटे हैं, तो ऑटोमेटिकली femoral ring वाइड होगा फीमेल्स में. femoral ring is wider in females. परफेक्ट है. अब ऑप्शंस देखिए. femoral sheath is continuous with the fascia transversalis. yes it is continuous. anterior wall fascia transversalis के साथ continuous है, posterior wall fascia iliaca के साथ. the sheath contains femoral nerve. ये रॉन्ग है. femoral nerve femoral sheath में नहीं है ना बच्चों. femoral nerve femoral sheath के बाहर होता है, it's outside the femur. The femoral canal lies medial. yes, it's medial. the canal is wider in females. perfect है. okay, perfect. See the next MCQ. Fibers from the arrow mark structure in the following diagram reach which nucleus of thalamus? Yes, students. तो ये क्या पॉइंट किया? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर विच इज पॉइंटेड? ये है मैमिलरी बॉडी. अब फाइबर्स कहाँ से बिगिन होता है? फाइबर्स कहाँ से अराइज होता है? फाइबर्स अराइज होते हैं हिप्पोकैम्पस से. फाइबर्स अराइज फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस से बनता है एल्वियस. एल्वियस का बना फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया का बना फॉनिक्स. फॉनिक्स विल गो इन द मैमिलरी बॉडी. मैमिलरी बॉडी से ये जाएगा anterior nucleus of thalamus. anterior nucleus of thalamus. cingulate gyrus. वापस हिप्पोकैम्पस में. बच्चों, तो हिप्पोकैम्पस से आए एल्वियस. हिप्पोकैम्पस इज अ ग्रे मैटर. हिप्पोकैम्पस इज अ न्यूक्लियस. so हिप्पोकैम्पस ग्रे मैटर. तो हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स अराइज होता है. ये फाइबर्स का नाम क्या है? एल्वियस. एल्वियस का क्या बनेगा? फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया का बनेगा फॉनिक्स. फॉनिक्स विल रिले इन द मैमिलरी बॉडी. एंड मैमिलरी बॉडी से जो ट्रैक्ट बनेगा दैट विल गो टू द एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस. मैमिलरी बॉडी से ट्रैक्ट बनेगा दैट विल गो टू द एंटीरियर थैलेमस. फिर एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से ये जाएगा सिंगुलेट गाइरस से वापस हिप्पोकैम्पस अंदर. व्हाट इज दिस सर्किट नोन एज? ये सर्किट का नाम है पैपिस सर्किट. इसका नाम है पैपिस सर्किट. ठीक है बच्चों, ये पैपिस सर्किट. तो व्हाट इज आंसर फॉर दिस? फाइबर्स फ्रॉम द arrow mark structure in the following diagram reach which nucleus of thalamus? ये कौन से न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाते हैं? आंसर इज anterior nucleus of thalamus. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके. आंसर दिस. superior gluteal nerve supplies all the following structures except. चलो बोलो बच्चों.
ये जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है वो 3 मसल्स को सप्लाई करती है, वी नो दिस. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व विद द पायरिफॉर्मिस? पायरिफॉर्मिस होता है ना पियर शिफ्ट मसल ग्लूटियल रीजन के अंदर. ग्लूटियल रीजन के अंदर एक पियर शिफ्ट मसल है जिसका नाम है पायरिफॉर्मिस. So where is the superior gluteal nerve with respect to the piriformis? It is on the superior border of piriformis. Inferior gluteal nerve is on the inferior border of piriformis. So what is the superior gluteal nerve supply? 3 muscles को supply करता है ये, the gluteus medius, the gluteus minimus and the tensor fascial lata. Gluteus medius, gluteus minimus and the tensor fascial lata. So medius and minimus are tensor fascial lata. It does not supply the piriform. It does not supply the piriform. What does the superior gluteal nerve supply? Supplies the gluteus medius, the gluteus minimus, tensor fascial. What is the inferior gluteal nerve supply, students? The inferior gluteal nerve supplies the gluteus maximus. Inferior gluteal nerve supplies the gluteus maximus. ठीक है? Perfect. See the next. The marked cell inhibit which of the following structures? What is the slide of? ये histologically slide कौन सा है? What is this histological slide of? This is the cerebellum. Cerebellum. ठीक है? अब मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट देता हूँ आपको. हाँ, एक फ्लो चार्ट देता हूँ. देखो, fibers to the cerebellum. Fibers coming to the cerebellum are of 2 types. होता है climbing fibers, होता है mossy fibers. एक होता है climbing fibers, एक होता है mossy fibers. अब ये जो climbing fibers है, climbing fibers ये कहाँ से आते हैं? Climbing fibers arise from inferior olivary nucleus. Climbing fibers कहाँ से आते हैं? Inferior olivary nucleus से आते हैं. Mossy fibers arise from vestibular apparatus, spinal cord and the cortex. Okay, so mossy fibers, climbing fibers, right? तो ये जो climbing fibers है ये कहाँ से आते हैं? Inferior olivary nucleus. And ये जो inferior olivary nucleus ये कहाँ पे located है? medulla के अंदर. तो fibers सीधे climb होता है. These are climbing fibers. तो बाकी fibers आते हैं, इनको आप बोलोगे mossy fibers. Mossy fibers कहाँ से आएंगे? एक vestibular apparatus से आते हैं. vestibular apparatus, spinal cord, the cerebral cortex. They form a network. तो इसे हम बोलते हैं mossy fibers. अब ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ना, दे स्टिमुलेट द Purkinje cell. दे स्टिमुलेट द Purkinje cell. ये जो मॉसी फाइबर है ये क्या स्टिमुलेट करता है? दे स्टिमुलेट द ग्रैन्यूल सेल. ग्रैन्यूल सेल फर्दर स्टिमुलेट्स द Purkinje cell. फाइनली आपको किसको स्टिमुलेट करना है? Purkinje सेल को. फाइनली Purkinje सेल को स्टिमुलेट करना है. क्लाइंबिंग फाइबर्स डायरेक्टली Purkinje सेल को स्टिमुलेट करता है. तो मॉसी फाइबर्स है ये पहले स्टिमुलेट करता है ग्रैन्यूल सेल को. ग्रैन्यूल सेल फाइनली Purkinje सेल को स्टिमुलेट करता है. नाउ दिस Purkinje सेल is the sole motor output. It's the sole motor output from the cerebellum. The sole motor output from the cerebellum, and it inhibits the deep cerebellar nucleus ऋषभ ले रहा हूँ. अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया ऋषभ. ले रहा हूँ. I couldn't get a chance to start the lecture. So ये Purkinje cell क्या करता है? It's the sole motor output and it inhibits the deep cerebellar nucleus, the lateral vestibular nucleus. Lateral vestibular, deep cerebellar
nucleus and the lateral vestibular. Okay, is clear to all of you? So which is the sole motor output of the cell from the cerebellum? The Purkinje cell. And ये Purkinje cell क्या करते हैं? ये inhibit करते हैं the deep cerebellar nucleus and the lateral vestibular nucleus. Deep cerebellar and the lateral vestibular nucleus को inhibit करेंगे. ठीक है बच्चों? Once again, cerebellum के पास जो fibers आते हैं वो दो types के होते हैं. एक होता है climbing fiber, दूसरा होता है mossy fiber. तो ये जो climbing fiber है ये कहाँ से आते हैं? Inferior olivary nucleus. जो mossy fiber है वो आते हैं cerebral cortex, the spinal cord and the vestibular apparatus. जो mossy fibers, जो climbing fiber है वो stimulate करेंगे Purkinje cell को, and जो mossy fiber है it is going to stimulate the granule cell. Granule cell stimulates the Purkinje cell. Okay, clear to all of you? ठीक है. The answer would be what? Deep cerebellar nucleus. Inhibit which of the following? Deep cerebellar and the lateral vestibular. दोनों है, but vestibular nucleus का type नहीं लिखा है, तो answer would be deep cerebellar nucleus. The first answer would be the deep cerebellar. Perfect है. चलो ये देखिए. Which of the following muscle forms the pelvic diaphragm? Which of the following muscle forms the pelvic diaphragm? बोलो बच्चों, pelvic diaphragm का दूसरा नाम. Who's the muscle which forms the pelvic diaphragm? Any guesses? वो कौन सा मसल है जो pelvic diaphragm बनाता है? Levator ani. And levator ani is made up of three parts. एक होता है 𝐒𝐄𝐶, एक होता है pubococcygis, and एक होता है ischiococcygis. Right? So answer is A and B. Answer is A and B. So levator ani or the pelvic diaphragm is formed by pubococcygis, 𝐒𝐄𝐶, ischiococcygis. This levator ani का दूसरा नाम है pelvic diaphragm. Levator ani is also known as pelvic diaphragm, and this levator ani क्या separate करेगा? ये pelvis को separate करेगा perineum से. It is going to separate the pelvis from the perineum. क्या pelvis को perineum से ये separate करेगा? Levator ani. क्या बच्चों? Are you able to follow this? Okay. The levator ani is going to separate the pelvis from the perineum. Obturator internus. Obturator internus कहाँ पे होता है? ये obturator foramen से arise होता है. मतलब obturator foramen के बाहर से एक मसल है, उसका नाम है obturator externus. Obturator foramen के अंदर से एक मसल arise होता है, that's obturator internus. Obturator internus. ये obturator internus का nerve supply क्या है? It's the nerve to obturator internus. It's a branch of sacral plexus. Sacral plexus. ठीक है बच्चों? Okay, चलो. To the next. चलो बच्चों आंसर करिए. The third part of vertebral artery is related to which of the following marked region in the following diagram? तो vertebral artery किसकी branch होती है बच्चों? Vertebral artery is a branch of the first part of subclavian artery, है ना? Vertebral artery is a branch of first part of the subclavian artery. अब ये जो vertebral artery है, it enters into this foramen. ये क्या foramen है बोलिए? What is this foramen of the cervical vertebrae? ये है foramen transversarium. The vertebral artery goes into the foramen transversarium of which vertebrae? C6. C7 में नहीं जाती, C6 में जाती. So vertebral artery is a branch of the subclavian artery. It enters into the foramen transversarium of C6 vertebrae. C6, 5, 4, 3, 1. First vertebrae को cross करती है. It crosses the atlas. ये ना atlas को cross करेगा ऐसे. एटलस को ऐसे क्रॉस करेगा एंड बोथ द वर्टिब्रल विल जॉइन द बेसिलर आर्टरी. दिस पार्ट डी, जो डी लिखा है ना, दिस पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ द एटलस द वर्टिब्रल. अब ये वर्टिब्रल आर्टरी स्कल के अंदर जाएगा, दोनों वर्टिब्रल जॉइन होंगे द बेसिलर आर्टरी.
The answer is D for this. What are the branches of vertebral artery? Any guesses? What are the branches of vertebral? बोल सकते हो बच्चों? Branches बोल सकते हो vertebral artery के? Any guesses? The vertebral artery is a branch of first part of subclavian, enters the foramen transitorum of C vertebrae. अब ये एटलस को क्रॉस करेगा, posterior arch of atlas को क्रॉस करेगा, ये स्कल के अंदर जाएगा to the foramen magnum. अब ये vertebral arteries will join to form the basilar artery. So what are the branches of vertebral? एक होता है anti spinal, एक सिंगल मिडलाइन में होती है anterior spinal artery. दो आर्टरीज पीछे होते हैं, इसका नाम है posterior spinal artery. तो एक है एंटीरियर स्पाइनल, दो पोस्टीरियर स्पाइनल, एंड तीसरा कौन है? तीसरा, एनी गेसेस? यस, which is the third branch? The third branch is pica, posterior inferior cerebellar artery. Posterior inferior cerebellar artery, pica. Posterior inferior cerebellar artery, and thrombosis of this posterior inferior cerebellar artery leads to a syndrome. उसका नाम क्या है? Wallenberg syndrome. This is the lateral medullary syndrome or Wallenberg syndrome. So thrombosis of pica leads to Wallenberg syndrome or the lateral medullary. ठीक है? चलो, see the next. Fracture of jugular canal can present as. चलो बच्चों, अब ये बोल सकते हो आप, जुगुलर कैनाल के तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं. देखो, ये जुगुलर फोरामेन है, जुगुलर फोरामेन के तीन कंपार्टमेंट्स है, एक है मिडिल, एक है पोस्टीरियर. एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर. एंटीरियर कंपार्टमेंट पे क्या आ जाता है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस. इंफीरियर पेट्रोसल साइनस. मिडिल कंपार्टमेंट से क्या आ जाता है? 9, 10 and 11th cranial nerves. 9th and 11th cranial. And posterior compartment से क्या आ जाता है? Ethmoid. तो जुगुलर फोरामेन के तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, anterior, middle, posterior. The anterior compartment से जाता है petrosal sinus. Middle compartment से जाता है 9th, 10th and 11th cranial nerves, and posterior compartment से जाता है sigmoid sinus. So now देखिए, fracture of jugular canal can present as. So what is the ninth nerve supply? ये ninth nerve क्या supply करता है? Ninth nerve supply special sensation to the posterior 1/3. General and special sensations to the posterior 1/3 of the tongue. The loss of taste sensations in the posterior 1/3 of the tongue. Yes, बराबर है ना ये? This is the answer. So glossopharyngeal nerve क्या supply करता है? It supplies the general and special sensation. Posterior 1/3 को supply करती है, बराबर है? Yes, प्रकाश, क्या बोल रहे हो प्रकाश? ये नहीं आंसर इसका बच्चा. लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस इन द एंटीरियर 2/3 नहीं है. एंटीरियर 2/3 टेस्ट कौन सप्लाई करता है? बोलो. चलो, बी एन इंटरैक्टिव सेशन, थोड़ा सा आंसर करो सो इट इज इजी टू एक्सप्लेन. एंटीरियर 2/3 टेस्ट कौन सप्लाई करता है? फेशियल नर्व, इसका ब्रांच है ना कॉर्डा टिम्पानी. तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग स्पेशल सेंसेशंस इज फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पानी ब्रांच ऑफ फेशियल. posterior 1/3 of the tongue special sensations and general sensations कौन सप्लाई करेगा? glossopharyngeal. जनरल सेंसेशंस एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ये कौन सप्लाई करेगा? लिंगुअल नर्व. ये लिंगुअल नर्व है ना, ये है कॉर्डा टिम्पानी. एंड लॉस ऑफ मोटर सेंसेशंस इन द एंटीरियर 2/3. मोटर सेंसेशन ऑफ द टंग कौन है? हाइपोग्लॉसल. जितने भी मसल्स है टंग के, ऑल द मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय व्हिच नर्व? हाइपोग्लॉसल नर्व, except palatoglossus, which is supplied by vagoaccessory complex. vagoaccessory. ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये? Fracture of jugular canal can present as. Your answer is B. प्रकाश, क्लियर है ना प्रकाश? आंसर इज बी. हाँ, ए नहीं आंसर, बी. एंड मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द टंग कौन है? हाइपोग्लॉसल नर्व. ये याद रखना, मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द टंग इज हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस. Okay, answer students, answer. The nerve supplying the marked muscle originates at the level of. Any guesses? Marked muscle ये है, देखो ये eyeball है, ये eyeball है ना, ये eyeball है, हाँ right. ये है lateral, ये है medial. Lateral and medial. So what is this muscle?
ये मसल है, this is the muscle, so this is the medial rectus, medial rectus. And you tell me बच्चों, all the extraocular muscles, जितने भी muscles हैं, all the extraocular muscles supplied by which nerve? Third nerve. All the extraocular muscles are supplied by third nerve except lateral rectus, which is supplied by sixth nerve, superior oblique, which is supplied by fourth nerve. Superior oblique, which is supplied by fourth nerve. बाकी जितनी भी extraocular muscles है, these are supplied by which nerve? Third nerve. Except lateral rectus, which is supplied by sixth nerve, superior oblique, which is supplied by fourth nerve. Superior oblique is supplied by fourth nerve. Okay. So what is the answer for this? ये medial rectus है. So which is the nerve which supplies the medial rectus? It's the third nerve, oculomotor nerve. And ये oculomotor का nucleus कहाँ पे होता है? Oculomotor nerve का nucleus होता है in the midbrain. The midbrain at the level of superior follicle. ठीक है, सो मिडब्रेन में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? थर्ड नर्व का न्यूक्लियस मिडब्रेन में होता है at the level of superior follicle. At the level of superior. तो वहाँ पे और क्या होता है? वहाँ पर रेड न्यूक्लियस होता है, रेड न्यूक्लियस at the level of रेड न्यूक्लियस. तो सुपीरियर फॉलिकुलस है ना मिडब्रेन का, वहाँ पे होता है रेड न्यूक्लियस. तो ऑलिवरी न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एक होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो ऑलिव्स बनाते हैं, ऑलिव्स. इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो ऑलिव्स बनाते हैं. पिरामिडल डिकसेशन, ये कहाँ पे होता है? पिरामिडल डिकसेशन, it's in the medulla. Subthalamic nucleus, that's the last part of the thalamus. The last part of the thalamus is known as subthalamus. Yeah, to all of you. Okay, see the next MCQ. Injury to the lower brachial plexus results in complete paralysis. What is the characteristic clinical finding in this lesion? What is the characteristic clinical finding in this? The Hlumke's paralysis. Which trunk of the brachial plexus is called, bachcho? Which trunk of the brachial plexus is called? It's the lower trunk. It's the lower trunk. And which roots are involved? Roots 8. Roots involved are C8. Okay. Fine, students. So Hlumke's paralysis में which is the trunk involved? Lower trunk. Lower trunk is formed by which root? C8 and T1. And C8 and T1 mainly supply. Which T1 and I mainly supplies intrinsic muscle. The one mainly supplies the intrinsic. तो क्या होता है इससे? क्लॉ है. Understanding? The lower trunk of the brachial plexus, roots are C8 T1. This C8 and T1 mainly transform paralysis. This muscle, claw hand. Prakash, answer C is C. C8 and T1. T1 में yes, okay. तो character, see, Horner syndrome भी है. Horner syndrome भी होता है because sympathetics are involved. Prakash, right? D भी लिखोगे तो भी ठीक है. But characteristic clinical finding. Characteristic clinical finding क्या होगा? क्लॉ है. Horner syndrome is fine. Horner syndrome भी होगा, but clinical finding mainly would be क्लॉ है. Fine. Policeman stiff hand कभी होता है? Erb's paralysis. Erb's paralysis में होता है policeman. Wrist drop is due to paralysis of radial nerve. Injury to the radial nerve. Injury to the radial nerve leads to what? Wrist drop. Policeman stiff hand is seen in Erb's paralysis. Erb's paralysis में कौन involved होता है? Upper trunk of the upper trunk. And upper trunk is formed by which roots? 5, 6, 3, 5, 6, 6. Okay, students, clear? So your first answer is claw hand. अगर आपने Horner syndrome भी लिखा, that's also fine, no problem. ठीक है, प्रकाश? See the next MCQ. Superior boundary of the arrow mark structure is. What is this mark structure? ये कौन है? ये है F.
एपिप्लॉइड फोराmen, एपिप्लॉइड फोराmen, ये है एपिप्लॉइड फोराmen। तो एपिप्लॉइड फोराmen का एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय व्हाट? एंटीरियर बाउंड्री इज, ये कौन है? लेसर ओमेंटम। एंटीरियर बाउंड्री में क्या होता है? लेसर ओमेंटम, एंड लेसर ओमेंटम में क्या है? हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, फाइबर। तो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लॉइड फोरामेन किससे बनता है? लेसोमेंटम। एंड ये लेसोमेंटम के अंदर क्या होता है? हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, फाइबर। पोस्टीरियरली कौन है? हु इज दिस पोस्टीरियरली? व्हाट इज दिस? आईवीसी। आईवीसी होता है ना, पीछे आईवीसी। ऊपर व्हाट इज दिस? लोब ऑफ लीवर, इसका नाम है कॉर्डेट, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। एंड नीचे होता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यू, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यू। दिस बिकम्स द बाउंड्रीज ऑफ एपिप्लॉइड फोरामेन, ठीक है ना। एपिप्लॉइड फोरामेन का दूसरा नाम क्या होता है? फोरामेन ऑफ विंस्लो। एपिप्लॉइड फोरामेन का दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ विंस्लो। एंड बाउंड्रीज कौन है इसके? एंटीरियरली इज द लेसर ओमेंटम कंटेनिंग द हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइंडर। पोस्टीरियरली आईवीसी, superiorly the caudate lobe of leaf, inferiorly is the first part of duodenum, first part of duodenum. The superior boundary of the arrow mark structure is caudate lobe, caudate lobe of leaf. Clear to all of you? Perfect है। IVC पीछे है, posterior, caudate lobe is wrong, portal vein is anterior, caudate lobe is superior. Okay, see the next MCQ, students. Branches of anterior division of internal ilia. Any guesses? Anterior division of internal ilia. इंटरनल इलियक आर्टरी के दो डिविजन होते हैं, एक होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस बोल सकता है कोई? एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस सुपीरियर वसाइकल, इंफीरियर वसाइकल, मिडिल रेक्टल, ऑब्चुरेटर, uterine and vaginal, inferior gluteal, टनल। हाँ एक मिनट, एक मिनट, देखते हैं अपन, देखते हैं प्रकाश, वेट, वेरी गुड, एटलीस्ट यू आर आंसरिंग गुड। तो 7 ब्रांचेस है बच्चा, सुपीरियर वसाइकल, इंफीरियर वसाइकल, मिडिल रेक्टल, ऑब्चुरेटर, यूट्राइन एंड वजाइनल, इंफीरियर ग्लूटियल एंड इंटरनल ग्लूटियल। अब पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांचेस देखिए, पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांचेस सुपीरियर ग्लूटियल, lateral sacral and ilio, gluteal, sacral and lumbar. Okay, these are the branches from the posterior division of division के branches कौन है? Superior gluteal, lateral sacral and lumbar. So what will the answer be? Branches from the anterior division. Superior gluteal नहीं है, superior gluteal posterior division का है. Inferior gluteal yes, superior vesical yes, inferior vesical yes, middle rectal vaginal and middle rectal. So 2 4 2 3 4 5 6 2 4 5 6. Answer is B. प्रकाश क्या आंसर किया? C आंसर किया, C नहीं है प्रकाश, आंसर इज B प्रकाश। पढ़ो और पढ़ो प्रकाश, कम ऑन, हरी। आंसर बी होगा। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरइलियाक। इंटरइलियाक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, फाइन, आंसर इज बी। ओके, तो आंसर करिए द नेक्स्ट एमसीक्यू। A 24-year-old final year student, while delivering a presentation on internal capsule, mentions that internal capsule is a weak structure with parts, meaning the anterior limb change body. He also mentions that blood supply of the internal capsule and asks about which part of the contralateral cross upper and lower limb. तब ये अपर एंड लोअर लिम्ब को कौन सप्लाई करेगा? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स है ना, इनको कौन सप्लाई करेगा? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर।
and corticospinal fibers pass through which limb of the internal cavity? Any guesses? Corticospinal fibers pass through the posterior limb of internal capsule. Answer would be posterior limb. जेन्यू से कौन जाता है? जेन्यू से जाते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर. वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड. आंसर इज पोस्टीरियर limb. जेन्यू से जाता है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर. सब लेंटिफॉर्म पार्ट से क्या जाता है? ऑडिटरी एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से कौन जाता है? ऑप्टिक रेडिएशन. Optic radiation passes to the retrolentiform. Auditory passes through of each sublentiform. Clear to all of you? The answer is posterior limb of. I hope this is clear to all of you. See the next. A patient presented with inability to flex the distal interphalangeal joints of 4th and 5th digits of the right hand. Patient is also unable to hold the paper in between the fingers. Hold the paper between the fingers. ये किसका action है? Which is the muscle which causes adduction of the fingers. Adduction of fingers. Adduction होता है तब paper को hold कर सकते हैं. With this adduction of the fingers, you can hold the paper between fingers, and this is done by palmar interstia. Palmar interstia क्या करते हैं? Adduction. This palmar interstia is no. Palmar interstia is supplied by ulnar nerve. So, flex the distal interphalangeal joints of 4th and 5th digits. Patient is also not able to hold. So, ये कौन damaged है? Ulnar nerve. At which of the following mark structure is the most likely to be injured? बोलो प्रकाश बोलो. ulnar nerve कहाँ पे मिलेगी आपको? A, B, C and D. tumorous दिया है. कहाँ पे होगा ulnar nerve? Which level will be the ulnar nerve? Yes, प्रकाश. कहाँ मिलेगा ulnar nerve? Behind the medial epicondyle. ये ना, ये D है ना ऑप्शन. ulnar nerve medial epicondyle के पीछे से जाती है ना. So when your elbow hits the bench, जब अपना elbow bench को hit करता है तो ऐसे tingling numbness होता है ना. That is because of the ulnar nerve. The answer is D for this. D. ठीक है प्रकाश, क्लियर है? D नहीं है बच्चा, D है. ulnar D है आंसर. D. मीडियल एपिकोंडाइल डी है, सी नहीं है. सी इज द लैटरल एपिकोंडाइल. सी क्या है? लैटरल एपिकोंडाइल है. डी आंसर. डी इज द मीडियल एपिकोंडाइल. क्लियर है? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. Answer this. Which of the following muscles are not used in overhead abduction of the arm? Which of the following muscles is not used for overhead abduction? अब बोलो बच्चों. 0 to 15 degrees of abduction ये कौन करता है? 0 to 15 degrees of abduction कौन करता है? सुप्रा स्पाइनल. 0 to 15 degrees कौन करेगा? सुप्रा स्पाइनल. 15 to 90 degrees of abduction कौन करेगा? deltoid. 0 to 15 सुप्रा स्पाइनल. 15 to 90 deltoid and 90 and above. 90 and above का abduction कौन करेगा? serratus. serratus anterior and trapezius. बराबर है? तो आंसर क्या होगा? Which of the following muscles are not in overhead abduction of arms? Which of the following muscles are not used in overhead abduction of arms? Muscles लिखा है muscles. So your answer would be C and D. C and D दोनों. C and D. तो deltoid क्या करता है? deltoid does 15 to 90 degree abduction. 15 से 90 कौन करेगा? deltoid. And 90 and above ये दो muscles होते हैं. एक होता है serratus anterior, दूसरा होता है trapezius. So trapezius and serratus anterior, they will do abduction from 90 overhead abduction. Pectoralis major का action क्या है? Pectoralis major का action is adduction, flexion and medial rotation. Adduction, flexion and medial rotation of the shoulder joint. Okay. Pectoralis major का action is adduction, flexion and medial rotation. Shoulder. Adduction, flexion and medial rotation
परफेक्ट है. So serratus anterior अगर आपने लिखा, trapezius लिखा, that's also fine. See the next MCQ. While a surgeon performing hip joint surgery on a 49-year-old female accidentally severs the right inferior gluteal nerve. Inferior gluteal nerve arises from the posterior. The inferior gluteal nerve is responsible for supplying the. Yes. ये कौन मसल है? This is the glute. ये मसल है gluteus maximus. And what is the action of gluteus maximus? The chief action, the main action of gluteus maximus. Gluteus maximus ऐसे पूरा होगा, ये पूरा मसल होगा gluteus maximus ऐसे. तो gluteus maximus को कट किया, small part दिख रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा part दिख रहा है, that's gluteus maximus. Gluteus maximus main action क्या है? Sorry, main action is extension. Extension. The main action of gluteus maximus is extension at the hip joint. The action is lateral rotation. The action is. What is the main action of gluteus maximus? Extension at the hip joint. Extension. दूसरा action क्या होगा? Lateral rotation. Lateral rotation. दूसरा action होगा abduction. Abduction at the shoulder joint. Abduction at the. ठीक है बच्चों? What is the nerve supply of gluteus maximus? Inferior gluteus. Inferior gluteus. Gluteus maximus को कौन supply करेगा? Inferior gluteus. तो इसमें आंसर क्या होगा? Lateral rotation and abduction. Lateral rotation and abduction. चलो answer this. Phonics contains. Phonics क्या फाइबर्स होते हैं? Phonics दो टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं इसमें association as well as projection. It contains both types of fibers, association and projection. वैसे fibers of the brain are of three main types: commissural, projection, association. Fibers of the brain are of three main types: commissural fibers, projection fibers, association. Right? Commissural fibers क्या करते हैं? Commissural fibers क्या करते हैं? They connect similar areas in the opposite hemisphere. Commissural fibers क्या connect करते हैं? Similar areas in opposite hemisphere. Example है corpus callosum. Corpus callosum, anterior commissure, posterior commissure, habenular commissure. ये जितने भी fibers है ना, इसे हम बोलेंगे commissural. तो commissural fibers क्या connect करते हैं? Similar areas in the opposite hemisphere. ये जो projection fibers है ना, ये project करते हैं बाहर की तरफ. ये project outside the brain. Example is internal capsule. Internal capsule. दूसरा example of projection fiber is phonics. ठीक है? Association fibers क्या connect करते हैं? Association fibers connect करते हैं different in the same hemisphere. Different areas like motor area, sensory area, Wernicke area, Broca's area. The association fibers क्या connect करते हैं? Different areas in the same hemisphere. Example of association fibers कौन है? Uncinate fascicle. Example of association fiber कौन है? एक fascicle. दूसरा example है phonics. So phonics belongs to both the types of fibers. Phonics belongs to association fiber as well as projection. Association and projection fiber. Perfect है students? Perfect. मैंने fibers भी आपको सारे explain. Okay, see the next MCQ. The image of the embryo at the end of third week is given. Subdivision of intraembryonic mesoderm is shown in the figure. Identify the area which develops body cavity. Answer is D. So A कौन है? A is the notochord. A कौन है? Notochord. C कौन है? C is paraxial. D कौन है?
intermediate intermediate plate mesoderm. D कौन है? Lateral. तो in the center is the notochord. तो मीसोडर्म है वो तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है. एक है पैरेक्शियल मीसोडर्म, दूसरा है इंटरमीडिएट प्लेट मीसोडर्म एंड लैटरल प्लेट. अब पैरेक्शियल मीसोडर्म से क्या बनता है? सोमाइड. सोमाइड्स. पैरेक्शियल मीसोडर्म से बनता है सोमाइड्स एंड सोमाइड्स विल फॉर्म डर्मोमायोटोम एंड स्क्लेरोटोम. डर्मोमायोटोम एंड स्क्लेरोटोम. इंटरमीडिएट प्लेट मीसोडर्म से क्या बनेगा? द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम. द जेनाइटल सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम दोनों बनते हैं फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेट मीसोडर्म. एंड लैटरल प्लेट मीसोडर्म से बनते हैं body cavity, pleural cavity, the peritoneal cavity, pericardial cavity. जितने भी body cavities है, these are derived from the lateral plate mesoderm. ठीक है. पैरेक्शियल मीसोडर्म से क्या बनेगा? सोमाइड्स. इंटरमीडिएट प्लेट मीसोडर्म से क्या बनेगा? जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम. से क्या बनेगा? बॉडी कैविटीज, प्लूरल कैविटी, द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी. परफेक्ट है. आंसर इज डी. ओके बच्चों, लास्ट एमसीक्यू है. आंसर दिस. A male newborn is delivered at term to a 30 years old. Pregnancy and delivery were uncomplicated. At birth, what is known. When the newborn cries, straw-colored fluid leaks the umbilical. The external genital is normal. The following is most likely cause of this newborn symptoms. Yes, what is the answer for this? The answer is failed obliteration of by 𝐴𝐿𝐴. फीचर लाइफ में क्या होता है? फीचर लाइफ में फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर है अपना, फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू द फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू द अम्बिकल ट्रैक्ट होता है. का नाम यूरेथ्रस और 𝐴𝐿𝐴. एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू अम्बिकल, फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू द अम्बिकल एक ट्रैक्ट होता है जिसका यूरेथ्रस, उसका दूसरा नाम है 𝐴𝐿𝐴. नॉर्मली क्या होता है? ये ऑब्लिटरेट हो जाता है. दिस गेट्स ऑब्लिटरेटेड. अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, गेट्स ऑब्लिटरेटेड ऑफ, एंड इसे हम बोलते हैं मीडियन अम्बिकल लिगामेंट. इसे हम बोलते हैं मीडियन अम्बिकल लिगामेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. इन फीटल लाइफ फ्रॉम द ब्लैडर, अपना जो ब्लैडर है उसका एपेक्स है, वहां से अम्बिकस तक एक कम्युनिकेशन, का नाम है 𝐴𝐿𝐴. आफ्टर बर्थ ये ऑब्लिटरेट है एंड मीडियन अम्बिकल. अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, इट डजंट and will be passing in through the umbilical, the weak or crying umbilical, weeping umbilical. अगर vitelline duct close नहीं हुआ, so there's a communication between midgut and the umbilical. Vitelline duct close नहीं हुआ, midgut and umbilicus के बीच. This is what this चूहा इसका बोलते हैं. अगर यूरेथ्रल फोल्ड्स क्लोज नहीं हुए, यूरेथ्रल फोल्ड से क्या बनता है? यूरेथ्रल फोल्ड्स, इससे बनता है लेबियम माइनोरा इन फीमेल्स, द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस. ओके, यूरेथ्रल फोल्ड से क्या बनता है? लेबियम माइनोरा ऑफ पेनिस. अगर वो फ्यूज नहीं हुआ तो हाइपोस्पीड. ठीक है बच्चों, क्लियर. सो आंसर इज फेल्ड ऑब्लिटरेशन ऑफ 𝐴𝐿𝐴. I hope these things are clear to you, and all the best from the entire team of PW MedEd students. All the best and do well in your exams. Will come with the recall session of the INICET. For more details, you can log on to PW MedEd app. Thank you from the entire team of